आज हम 6 पार्टिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. This is regular hexagon. कैमरा ऑन कर लो. Side A. We can name these A, B, C, D, E, F. O is the center of the hexagon. इसके हर vertex पे there is a charge Q, which is positive. Each vertex we have charge Q. And at the center also we have a charge Q. At center O also we have charge Q. So there are 7 charges as such, and the question is find the net force. First part at on Q at O, and the second part is on Q placed at F. So charges are distributed with the 6 vertices. There's one charge at the center, and the question is find the net force at the central charge O, and also find the force on the charge Q which is placed at F. First we answer the first part. First part answer करो पहले. Force on Q at O. Force on the charge Q which is placed at the center. How many charges in the surrounding to O? Mehak? 6 charges. In the surrounding of O we have 6 charges. We'll first find the magnitude of all these charges. And मैंने पहले ही बताया था रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है. As a result, all these will be equal to A only. In a regular hexagon, all triangles, 6 triangles are there, which are basically equilateral, and the side is A. We can find force on the charge at O because of A, force on the charge at O because of B, because of C, because of D, because of E, and because of F. इन सबके magnitudes find करेंगे पहले. Forces acting at the central charge because of all these charges at the vertices. Find करो और फिर इसका डायरेक्शन भी देखो. Find these forces and then see the direction as well. बताओ मुझे. by a square. Right. So all these forces will be the same in magnitude. KQ by A square. KQ square by A square. All these are equal in magnitude. But we know that a force is a vector quantity. इसीलिए हमें इनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी. तो पहले 3 की डायरेक्शन महक तुम बताओ और लास्ट 3 की डायरेक्शन इशिता बताएगी. फर्स्ट 3 की डायरेक्शन बताओ महक. ओई का So डायरेक्शन. A to O, like A to O.
यहीं पे मार्क कर लेते हैं, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए, यू कैन से Yeah. टुवर्ड्स ओडी, है ना? Towards OD. राइट, दिस इज बेटर। तो दिस इज फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको पुश करेगा, हमें इसका मोशन देखना होता है इशिता, जिस पे हम फोर्स निकाले उसका मोशन देखना होता है, दैट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स ओडी। एफओबी का डायरेक्शन, Towards E, like OE. ये पॉजिटिव इसको पुश करेगा, तो दिस इज एफ ओ बी। देन एफ ओ सी, Towards OF, like CO. this positive will push this away, F O C. Now Ishita, your chance. For D, it is towards OA, This is F O D, perfect, and for E, it is towards OB, right? F O E, and finally and this for force, towards OC. right? Now you notice one thing, that these forces pairwise will cancel out. They are equal and opposite, and hence pairwise they will cancel out. You can lick low score. These forces are equal and opposite in direction, hence pairwise they will cancel out. So the net force at O will be zero. Therefore, the net force on the charge at the central charge would be zero. These forces will cancel out in pairs. As a result, the net force would be zero. Up the second part of the question. The second part of the question, we have to find the force on the charge which is at F. तो मैं इसको हटा रहा हूं अब। The second part is force on Q at F. तो charge which is being placed at F, उस पर हमें force निकालना। Now force इस चार्ज की सराउंडिंग कितने, इसके सराउंडिंग में there are how many charges? Again, there are 6 charges, because even this charge would push this charge, है ना? So let's find the force on F because of O, force on F because of A, force on F because of B, force on F because of C, force on F because of D, force on F because of E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनका मैग्नीट्यूड निकालो पहले, then we'll see the directions, and then we'll decide how to find the resultant. There are 6 forces acting on this charge. First, the magnitude of force. देखो, F पे O की वजह से, F पे A की वजह से, B की वजह से, एंड सो ऑन। ये वाला डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। दिस डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बाय सिमेट्री। बताओ। एफ हो तो सिंपल है, इट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ एफ ए।
ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नो इशू। एफ एफ बी, ये वाला तुम्हें डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है। इसको फॉर अ मोमेंट मैं एक्स ले लेता हूँ, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ एफ सी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ए प्लस ए, दैट इज 2a। एफ एफ डी वापस एक्स हो गया। एफ एफ ई के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ हाउ वुड यू फाइंड एक्स, टेल मी। एक्स वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? इशिता, महक, एनी आइडिया? So diagonal of a parallelogram. और डू यू रिमेम्बर समथिंग, कोसाइन रूल? लिखो, ये बहुत काम आएगा। ये सपोज वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, जिसमें ए के ऑपोजिट साइड ए है, बी के ऑपोजिट साइड बी है, सी के ऑपोजिट सी है। एंड सपोज आई फाइंड कॉस ऑफ ए, ठीक है? तो कॉस ऑफ ए इज ऑलवेज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बहुत काम आएगा। कॉस ऑफ ए, साइड का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर बाय 2bc, इसको कोसाइन रूल। तो जब भी किसी ट्रायंगल में तुम्हें तीन साइड दे रखी है और तुम्हें एक एंगल पता है और एक एंगल निकालना है कोई सा भी, तो वी कैन यूज दिस। अगर सपोज तुम्हें बी फाइंड करना है, कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी क्या होगा? जो एडजेसेंट साइड्स है ना, उनको इसका उनके साइड के स्क्वायर को ऐड कर दो, ऑपोजिट वाले को माइनस कर दो बाय 2ac। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, कॉस सी करना है तुम्हें, तो कॉस सी में क्या करोगे? एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी एंड ए। तो जो सी के ऑपोजिट है वो सी है, उसको माइनस कर दो, 2ab हो जाएगा। तो यूजिंग दिस कोसाइन रूल यू कैन फाइंड आउट एक्स के वैल्यू। तुम्हें ऑलरेडी मालूम है ये एंगल कितना है ये एंगल। दिस एंगल इज 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो यूज cos a, cos 120 एंड टेल मी क्या वैल्यू आएगी, बताओ। एडजेसेंट साइड इस एंगल की ए और ए है, ऑपोजिट साइड एक्स है। इफ आई यूज cos 120, cos 120 वुड बी, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये हो जाएगा 2a, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लिख लो पहले। cos 120 कितना होता है? cos 120 Nine minus half. माइनस हाफ, cos 120 विल बी cos 180 माइनस 60। 120 सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60, दैट इज -1/2। ये वैसे याद होना चाहिए रिजल्ट। तो -1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So that gives you x square is equal to 3a square. That gives you x is equal to root 3a. X की वैल्यू रूट 3 आ गई। So this side is basically root 3 है। तो हम x को रूट 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज रूट 3a का होल स्क्वायर, ये भी रूट 3a का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज ऑल्सो रूट 3a होल स्क्वायर। So now we know all forces and their magnitudes। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है और उनको
वेक्टोरियली ऐड करना है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वी हैव टू लुक इनटू द डायरेक्शन एस्पेक्ट आल्सो। ये लिख लेना, ये काम आएगा। दिस वी हैव डन इन मैथ्स। इस साल दोबारा कैसे करेंगे ये। कोसाइन रूल बहुत काम आता है जब भी किसी ट्राइंगल में तीन साइड पता है और तुम्हें एक एंगल फाइंड करना है, या एक एंगल दे रखा है बाकी दो साइड दे रखी है और तुम्हें थर्ड साइड फाइंड करनी है। वी यूज दिस कोसाइन रूल। अब वन बाय वन विल सी द डायरेक्शंस एंड फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो डायग्राम बड़ा सा बनाया ना तुम लोगों ने, तो डायग्राम हैज टू बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अगर डायग्राम छोटा बना है उसको वापस बड़ा कर लो साफ, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेस की डायरेक्शन अब दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट एफ ओ ओ, महक, एफ ओ का डायरेक्शन बताओ। Along the straight line, like टुवर्ड्स, away from F राइट, टुवर्ड्स towards, लेफ्ट यू कैन से, है ना। yeah. दिस इज एफ एफ ओ, परफेक्ट। एफ ओ बी का डायरेक्शन बताओ इशिता। एफ ओ बी का डायरेक्शन क्या होगा। So away from F along the line FB. एफ ओ बी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को पुश कर रहा है, ये पॉजिटिव को पुश कर रहा है। आई एक्सटेंड दिस, दिस इज एफ ओ बी। देन एफ ओ सी, महक, एफ ओ सी, सॉरी So हाँ एफ एफ सी, along the same line as F, F, O, राइट। और सो आगे दिस इज फोर्स ऑन एफ बिकॉज ऑफ सी। देन एफ एफ डी, शिता, Along the line DF away from F. यू एक्सटेंड दिस लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, एंड दिस फोर्स इज एफ एफ डी, एंड देन एफ ई एफ, force on F because of E. महक, so from E to F, away from F. no, force on F because of E. This one. Yeah, like E to F, starting from F. This is F F E, and the one more is left, which is A F. Force on F because of A. Force on this Along the because of. line AF away from F. So this is force on F because of A. All these forces are like this. I draw a vertical line. This time many forces are acting. Out of these many forces, six forces, two are along x-axis and other are not along a x or y axis. That means either I use component business to find the resultant force, या तो इनके हम component लेंगे, और else इनको हम पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं, बाय सिमेट्री ऑल्सो। ठीक है। लुक एट दिस फोर्स, ये तो हम किससे कंपोनेंट से करना है या पैरेललोग्राम मेथड से करना है। सिमेट्री भी है तो पैरेललोग्राम से तुम्हारा इजी हो जाएगा करना। कैन यू टेल मी दिस एंगल, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना होगा। दिस एंगल इज द सेम एज दिस एंगल, एग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। कितना है ये एंगल, ये पैरेललोग्राम में ये 120 है, पूरा 60 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा। 30. पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, पूरा एंगल 60 है ये वाला,
तो ये 30 हो गया, तो दिस एंगल इज 30, लिख लो, दिस एंगल इज 30। नजर आ रहा है ये एंगल 30? कैन यू सी दिस? ठीक है, तो बाय सिमेट्री ये नीचे वाला एंगल भी 30 होगा। एज a result 30 plus 30, this would be 60 degree. Now see that I have two forces, FFD and FOB. I have two forces. This is not OB, this should be FB. I have force FFB and I have force FFD. Are they equal in magnitude? देखो, दोनों का Yes, sir. मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 60 degree. degree. 60 So degrees. when two forces of equal magnitude act at 60 degrees and two forces of equal magnitude act at 60 degree, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? Root लिखवाया था 3. रिजल्ट, Yeah. रूट 3 times each. So the resultant of this and this would be root 3 times each, any of them. FD लिख देता हूं मैं. Now these two are gone. I have written the result. Clear होगी बात? अब look at this force FFA. ये वाला एंगल बताओ कितना है? जो मैंने डबल मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का एंगल FFA के साथ कितना है? दिस एंगल इज द सेम एज दिस एंगल। जो ये वाला एंगल है वही एंगल ये वाला होगा। ढंग से देखो डायग्राम में, 60 degrees. 60 होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। दैट मीन्स इसके जो नीचे का सिमेट्री से एंगल है वो भी 60 हो गया, ये वाला एंगल भी 60 हो गया। तो इफ आई मार्क टू फोर्सेस FFE एंड FFA, दो फोर्सेस है FFE एंड FFA, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इनको मैंने एरो से मार्क कर दिया। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? ये टोटल एंगल, द एंगल इन बिटवीन इज 120 डिग्री। 120. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 120 है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट 120 डिग्री ईच, तो रिजल्टेंट कितना होता है? So it is the same. इट इज द सेम। दैट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा। मैंने उसको लिख दिया FFA, मतलब these two forces also gone। अब हमने सभी का रिजल्टेंट निकाल लिया है। Now we left with four forces, FFC, FFO, FFD, FFA, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। उन सबको ऐड कर लो एंड दैट विल योर रिजल्टेंट फोर्स। तो द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन F का जो मैग्नीट्यूड है, इट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ FFO प्लस FFC प्लस √3 times FFD plus FFA, इन सब का सम। दैट विल बी योर आंसर। देखो कितना आ रहा है? FFO is KQ square by A square. FFC is KQ square by 4A square. FFD is KQ by 3A square. KQ square by 3A square. FFA is that fine? And take common, KQ square by A square common आ गया 1
plus 1 by 4 plus root 3 by 3 plus 1. kq square by a square. 1 plus 1 is 2, और 2 में 1 by 4 भी ऐड कर दो, n by 4 and 1 by root 3 over it. And towards right, towards left, sorry, negative x by 8. So that is your final answer. ये आ रहा है? Yes, sir. That is the final answer. So this time we have done a system of charges which had 7 charges and we found the net force. जो अभी किया इसमें कोई डाउट है? Any question you want to ask? फिर हम आगे बढ़ेंगे. So whenever you apply Coulomb's law, first we find magnitude, ignore the negative positive sign. After that we see the direction. Direction देखने के बाद either using parallelogram method or component method, resolving the forces, we get the resultant force. ठीक है इशिता? Yes, sir. There's a question for you. Suppose we have 250 gram of water. तुम्हें 250 gram of water दिया हुआ है and the question is find how many positive charges are there and how many negative charges are there. Total positive charge because water is as is electrically neutral. लेकिन कितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव है. नो डाउट दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव है. माय क्वेश्चन इज हाउ मच negative charge is there and how much positive charge is there separately on 250 gram of water. सोचो कैसे करोगे. हमारे पास 250 ग्राम वाटर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है. अगर हमें थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, 250 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम वी नो द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वी नो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होगा ये मैग्नीट्यूड वाइज इतना होता है. तो अगर हमें समहाउ ये पता लग जाए कि 250 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन द दिस अमाउंट ऑफ वाटर. सोचो. If I ask you how many moles of water are there in 250 gram of water, can you find this? Number of moles में केमिस्ट्री में बड़ा होगा. अगर हमें सपोज पता लग जाए नंबर ऑफ मोल्स, वी नो दैट इन वन मोल वी हैव वन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज, है ना. तो हमें अगर ये पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, then we can reach to this answer. Number of moles is always mass of the material by its molar mass. तो मास ऑफ वाटर हमें पता है. मोलर मास कितना होगा पानी का?
वाटर का मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? Sir, 18. H2O 2 into 1 plus 16, 18 ग्राम मोलर मास इज 18 ग्राम। तो 18 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स 125। इसको फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं फिलहाल। 125 by 9, these many moles are there with us। अब in one mole, how many H2O molecules are there? One mole contains one Avogadro number of molecules. The number of molecules of water will be how many? 125 by 9 into Avogadro number. Na is Avogadro number. What is the value of Avogadro number? मैं Sir, 6.022 आगे नहीं आ। ये याद आ गया अब? यस। राइट। तो अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पता लग गया। इशिता, यहाँ तक बात सही है, परफेक्ट है, चल रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये कैसे पता करोगे? एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे पता करोगे बताओ, सोचो, The केमिस्ट्री में atomic पढ़ा ही होगा। number, हाँ, तो कितने हो गए? 10. 10। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन में तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो 1 into 2 हो गया। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स नाउ वी नो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो अब यू कैन टेल मी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 250 ग्राम ऑफ दिस। मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा फिर हमारा। देखो कितना आ रहा है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग चुके हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8, 1 into 2 10 हो गया। तो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब चार्ज निकालना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ। वी नो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से। डू दैट, ये 24 हो गया। 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो दैट मच विल बी योर। अब इसको एक बार सॉल्व करो बिना कैलकुलेटर, और सारी कैलकुलेशन जो भी तुम करोगे, यू हैव टू यूज ब्रेन, नो मोबाइल, नो कैलकुलेटर्स, उससे करोगे। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है।
1.33 into 10 to the power 7 तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है? यूनिट क्या होगी? coulomb. यस, ह्यूज चार्ज. कूलम इज अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज. इतना नेगेटिव चार्ज है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? हाउ मच पॉजिटिव चार्ज वुड बी देयर? बिकॉज वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा. So this charge is negative, and equal amount of positive charge will also be there, because in any electrically neutral material, number of positive charges, electrons, protons, and number of negative charge electrons are equal. That's your answer. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ये फॉर्मूला याद कर लेना. Number of moles is always molecule mass by molar mass. It is also number of atoms or molecules by Avogadro number. इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम. Small n है number of moles, m is mass of the material, capital M is mass, molar mass, n is total number of atoms or molecules, and Na is Avogadro number. So Hmm. I'm getting, I think I'm doing wrong or something, but I'm getting around 83 into 10 raised to the power 3 or something like that. 24 and minus 19 would be how much? 10 to the power 5. Yeah. So this power would be 10 to the power 5. And then this is 125. If approximately, let me do it. Oh, wait, I did wrong. I made a mistake. Approximately, if I take this as 6, it will be 2, 3 to the 6, these are now. So approximately it will be 250 into 1.6 divided by 3. Yeah. Yeah, I forgot to multiply by 6, 1.6. And 250 into 1.6 would be how much? 400 approximately. So 4 by 3 into 10 to the power 7. 4 by 3 is 1.33. Okay. Now, in the 11th class, you have done gravitational force, that is Newton's law of gravitation is a fundamental law of nature. Gravitational force is a fundamental force. Similarly, now we have seen in 12th class, the very first chapter, that Coulombic force is again a fundamental force of nature, and it is a fundamental law also. So if I mean, there could be 2 mark question or 1 mark question MCQ also, that write 2 or 3 similarities between and dissimilarities between Coulombic force and gravitational force. All this is there in the notes, which I'll give it to you. So what could be possible similarities? So this is Coulomb's law, and this is Coulombic force or electrostatic force rather. Right, electrostatic force, and it is gravitational force. Tell me 3 or 4 similarities. What are the similarities between Coulombic force and electrostatic force and gravitational force?
Both are inversely proportional to the square of distance between them. Okay. So that you can write that both obey inverse square law. Both obey inverse square law. Gravitational force is also 1 by r square proportional to, and is also proportional to 1 by r square. Second similarity, both are fundamental forces. फंडामेंटल का मतलब होता है कि ये किसी और चीज से डेराइव नहीं हुए हैं. इनसे वी कैन डेराइव समथिंग एल्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल. That these laws are not derived from any other law. They also hold true everywhere. So they are fundamental forces. Third similarity कौन बताएगा? So they are conservative in nature. They are conservative in nature. महक कंजर्वेटिव का मतलब बताऊं क्या होगा? कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन. हमने 11th में किया भी था ये वर्क पार एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वर्क और कंजर्वेशन एनर्जी में, कि अगर हम किसी मास को लिफ्ट करें स्ट्रेट पाथ से और हाइट एक्स पे रख दें, तब भी वर्क डन mgh होगा. उसको ऐसे इंक्लाइन पाथ पे ले जाए तब भी वर्क डन mgh होगा. या उसको स्टेप में ले जाए तब भी वर्क डन mgh होगा. या फिर उसको घुमा फिरा के लाके वापस रख दें तब भी वर्क डन mgh होगा. तो विच एवर पाथ you take the mass, the work done will not depend upon the path taken, whichever path you go. It depends only upon initial and the final position. That is the meaning of conservative force. Both the forces are conservative force. चाहो तो अलग से लिख लेना. Conservative force means work done does not depend upon the path taken. Work done does not depend upon the path taken, but it depends upon depends upon the initial and final position. But it depends upon initial and final position. एक और प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की. वो ये होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए कंप्लीट पाथ और लूप इज ऑलवेज जीरो. किसी मास को हमने लिफ्ट करके ऊपर ले गए, उसको वापस हमने नीचे लाके रख दिया, तो द टोटल वर्क डन विल बी जीरो. Work done by a conservative force in a complete path or a closed path is always zero. लिख लो. Work done by a conservative force in a closed path or loop is always zero. ये बात सभी को आगे बताओ. और कुछ है इसके अलावा? Any other similarity you do you see? काफी है. Dissimilarities बताओ. So gravitational force is always attractive in nature, while electrostatic can be attractive or repulsive. Gravitational force is attractive only, whereas electrostatic force is attractive as well as repulsive. इसमें एक और चीज हो सकता है, मेरे को भी याद आया. बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस. एक और सिमिलैरिटी हो सकती है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस. जैसे कि फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या होगा हमेशा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस. अगर ग्रेव रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो वो भी अगेन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स हमेशा दोनों मासेस को या दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग एक्ट करेगा.
तो दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। बाद में तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो, जब हम कुछ एंड वाले चैप्टर्स करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स इज इज ऑल्सो फंडामेंटल फोर्स, बट ये फोर्स जो है इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, अगर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि फोर्स का डायरेक्शन दोनों की लाइन को ज्वाइन करने के अलोंग हो। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। सो न्यूक्लियर फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स होता है जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है ये। और ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करता है, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, एंड इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, whereas these are central forces. अब हम आते हैं डिसिमिलैरिटीज। व्हाट आर डिसिमिलैरिटीज? एज यू टोल्ड, electrostatic force is attractive as well as repulsive, whereas gravitational force is attractive only. Perfect. ये पहली डिसिमिलैरिटीज हो गई। सेकंड बताओ महक। So gravitational force does not depend on a medium. यस, Electrostatic force depends on a medium. परफेक्ट। इस ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। हमने देखा भी था, अगर दो चार्जेस को हमने एयर में रखा तो इट वाज 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, whereas when you place the same charges in a medium the force has changed, so q1 q2 by r square, the force changes. And then we also found that fa by fm, it is epsilon by epsilon naught, which is epsilon r, which is also equal to dielectric constant. So it depends upon medium, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। परफेक्ट। और कुछ हो सकता है? एनी अदर डिसिमिलैरिटी? Gravitational force depends upon mass and electrostatic force depends upon charge. वो वी वोंट से दैट, आई मीन ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ही मास के बीचेस में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली बिटवीन द चार्जेस, तो उसको हम एज ए डिसिमिलैरिटी नहीं मानेंगे। बट यस, अनदर पॉइंट विल जस्ट कंफर्म दिस आल्सो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज much stronger compared to gravitational force. It's a weak force. In fact, अभी हम प्रूव भी करेंगे that electrostatic force is 10 to the power approximately 39-40 times stronger compared to gravitational force. So gravitational force is a weak force compared to electrostatic force, which is quite a strong force. Let's verify this also. Suppose we have two protons, या इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। The two electrons, mass of electron is this, separated by distance r. My question for you is that find the ratio of electrostatic force to gravitational force. Question के फॉर्म में लिख लो, find the ratio of electrostatic force, find the ratio of electrostatic force between two electrons to that to the gravitational force. Find the ratio of electrostatic force between two electrons to gravitational force. अब मैं तुम्हें वैल्यूज बता देता हूँ, फॉर्मूला भी देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1m2/r²। G की वैल्यू 1.67 10 to the power -11। मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 to the power -31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power -19 kg। दोनों का सेपरेशन 1 मीटर ले सकते हो चाहो तो, या आर ले लो, वो कट जाएगा। 1 मीटर ले लो। Take the separation between the two electrons to be 1 meter. Answer this.
कैलकुलेशन में गलती मत करना. There's no hurry, take your own time, आराम से करो, लेकिन पूरा आंसर सही आना चाहिए. K की वैल्यू you already know. We have placed the charge, two electrons in air only. ठीक है? K is also 1 by 4 pi epsilon naught. मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दें तो विल इट सूट यू? Take that, I mean, take your class 6 to 7:30 types. Is it fine with you? Because Trisha was finding the time clashing with the other classes. Yes, sir. Is okay? Yes, sir. All right. I'll confirm with the Maithili also, because then I'll change the time. अलग अलग कैलकुलेट करके मत डिवाइड करना. फॉर्मूला पहले सब्स्टिट्यूट करो और फिर तो डिवाइड लाइक दिस. K E into E by 1 का स्क्वायर G M E into M E by 1 का स्क्वायर, and then substitute the values and simplify. अब इसको सॉल्व कर लो.
पहले इंडिसेस को क्लियर कर लो। 1.6 का स्क्वायर 256, 2.56 हो जाएगा। 9.1 का स्क्वायर निकाल लेना, कितना आ रहा है? 10 to the power 9 -38 +11 +62, ये हो जाएगा। पॉइंट वन का स्क्वायर निकाला तो कितना आ रहा है? 82.81. 82.81। You can get rid of the decimals. Nine, 11, 20, 82, 82, and then 84, 84 minus 38. We're 42. ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.16. 0.16। Are you sure? डेसिमल में सही शिफ्ट किया है क्या? देखो जरा। जीरो जीरो वन सिक्स आ रहा है। So this would be 1.6 10 to the power 39. See? So electrostatic force is approximately 10 to the power 39 times stronger compared to gravitational force. Electrostatic force is approximately 10 to the power 39 times larger compared to gravitational force. So that's how we can say that gravitational force is a weak force. But in nature, if you see, gravitational force is more prevalent, you know. If I hold this pen, if I drop this pen, it will fall down because of gravitational force. The reason being that why the gravitational force is more prevalent or more prominent all around us, because the masses are huge, like Earth is there, which is attracting this pen. So everything which is released falls towards the Earth because of large gravitational force. Gravitational force becomes larger because of these values. Large masses come into picture. Earth is revolving around the sun. Moon is revolving around this Earth because it's large gravitational force. So that is because of
the masses are quite huge, which are there in the surrounding. As a result, gravitational force is more prominent, even though it's a weak force. More questions. Suppose we have a sphere A of radius r. It has a charge, say, 10 microcoulomb. There's another identical sphere B, which is initially uncharged. It has no charge on it. Q2, you can say, is zero. And there's another sphere which is also identical, same material, same radii, and it has charge on it, which is -4 microcoulomb. Diagram bana lo. So we have these three spheres which are identical in nature, same material, same radii, and the initial charges on these are like this. अब हम क्या कर रहे हैं? First part, A and C को we separate by a distance 1 meter, and we are assuming that this 1 meter is much large compared to the radii of the sphere, because Coulomb's law is basically, it acts for, it's true for point charges. तो हमने ये मान लिया है कि दोनों जो spheres हैं उनका distance 1 meter, radius 1 meter से बहुत कम है. So both the spheres are here like this, and the force between them says F. The force between them says F. The magnitude of the force when A and C are separated by 1 meter is equals to F in magnitude. Ab second part of the question is, suppose we bring A and B in contact. A and B are brought in contact. A B दोनों को हमने कांटेक्ट में लिया और फिर इनको सेपरेट कर दिया. And then separated. A and B are brought in contact and then separated. Now, what will be the force in A and C when kept at the same distance? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, force between A and C when they are at the same distance 1 meter. And your answer must be in F. हमारा जो आंसर है वो F के टर्म में होना चाहिए. करो ट्राई. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं लिया फिर वापस सेपरेट कर दिया. A and B are then brought in contact and then separated. And now force between A and C find करना है. And answer should be in terms of F. सोचो और मुझे आंसर बताओ. पहले A और C का डिस्टेंस 1 मीटर था, फोर्स F था. A और B पे कोई चार्ज नहीं है इन द बिगनिंग.
Let me tell you one more concept that when you have two identical spheres and you bring them in contact, physical contact, charges are equally distributed. ठीक है, जो भी इन दोनों पे नेट चार्ज होगा टोटल मिला के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. When two identical spheres are brought in contact, the total charge on them will be equally distributed between the two spheres. Sir, I am getting minus 0.18 Newton. नहीं, मैंने कहा था फोर्स एफ के टर्म में फाइंड करना. जो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एफ. ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 टाइम्स एफ, 1/3 टाइम्स एफ, 2/5 टाइम्स एफ. एफ के टर्म में आंसर चाहिए मुझे. जो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एफ. तो पहले तो एफ निकालो कितना है. एफ इज बेसिकली के को के रहने दो. 10 माइक्रोकुलम इंटू 4 माइक्रोकुलम. चार्ज का साइन नहीं देखना, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर. ठीक है. एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो है के इंटू 440 × 10⁻⁻12. ये है ना. एफ के टर्म में आंसर पूछा मैंने. अब क्या हुआ, जब तुमने ए और बी को आपस में टच किया तो बी पे तो चार्ज 0 है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया ए और बी का मिला के. The total charge of A or B would be 10 plus 0, that is 10. तो ये चार्ज दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो अब ए पे कितना चार्ज आ गया. ए पे चार्ज आ गया 5 माइक्रोकुलम और बी पे भी 5 माइक्रोकुलम आ गया. ठीक है. अब ए पे 5 माइक्रोकुलम, बी पे 5 माइक्रोकुलम. ए पे 5 माइक्रोकुलम चार्ज है. सी को हमने कुछ नहीं किया तो -4 माइक्रोकुलम चार्ज है. तो अब नया फोर्स कितना होगा ए और सी के बीच में. सपोज मैंने एफ डैश ले लिया, दैट वुड बी के इंटू 5 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस वही रखा है हमने. नाउ यू कैन सी क्या Sir, हो रहा है. F हम्म, by 2. बस सीधा सीधा आ गया वो. या तो दोनों को डिवाइड कर दो, या डायरेक्टली पता लग रहा है चार्ज एक आधा हो गया तो आंसर उतना हो जाएगा. तो दिस इज के इंटू 20 × 10⁻⁻12. तो एफ डैश बाय एफ विल बी 1/2. एफ डैश वुड बी f/2. Perfect. So your answer should be in terms of f. This till now everything is fine. आगे बढ़े हम इसी क्वेश्चन में. अब third part of the question is, after A and B are brought in contact and separated, then what will be the force between B and C and its nature also. What will be the force between B and C, and also tell us about its nature. वापस बता रहा हूँ, ए बी सी अलग अलग है इन द बिगनिंग. ए पे इतना चार्ज है, बी पे 0 है, सी पे इतना है. ए और बी को कांटेक्ट में लाए, सेपरेट कर दिया. अब सेपरेट करने का बी और सी में कितना फोर्स होगा. योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एफ. आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एंड नेचर ऑफ फोर्स भी बताना.
So distance between B and C is same as A What? and Yeah, C. yes, the same. 1 meter. So F by 2. बी पे कितना चार्ज है? 5। सी पे -4 माइक्रोकुलम। डिस्टेंस 1 मीटर। एफ डबल डैश ले लेता हूँ मैं इसको। एंड व्हाट अबाउट नेचर? के 5 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम बाय 1 स्क्वायर। अगेन सेम 20 हो जाएगा ना ये। तो एफ डबल डैश मैग्नीट्यूड वाइज वुड बी एफ बाय 2, लेकिन दिस फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों होगा? बिकॉज एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। द फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव। परफेक्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर ए वॉज इन कॉन्टैक्ट विद बी, कर दिया। अब हम बी और सी को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं। अब बी एंड सी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, देन द फोर्स बिटवीन ए एंड सी, या एंड बी निकाल लेते हैं। फोर्स बिटवीन ए एंड बी। Both partners B and C are brought in contact and then separated. Find the force between A and B in terms of F. B पे कितना चार्ज होगा बताओ? B पे कितना चार्ज था हमारे पास? 5। C पे कितना था? -4। दोनों को ऐड किया तो कितना चार्ज रह गया? 1। ये चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। जब इक्वली डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0.5 माइक्रोकुलम इस पे आएगा बी पे, और 0.5 माइक्रोकुलम सी पे आएगा। ए पे तो कितना चार्ज था? ए पे 5 था पहले। ये सिचुएशन हो जाएगी। Charge on B and C total is 1 microcoulomb, which will be, because charge algebraic in nature है. Charge is algebraic in nature. So it will be divided equally in both because of same radii. So half microcoulomb B पे जाएगा, half microcoulomb C पे जाएगा. A पे चार्ज वैसे 2.5 था, सॉरी 5 था पहले से ही. Now we can find the force. Find the force. Force is F triple dash. देखो कितना आ रहा है ये. K into 5 into 10 to the power minus 6, 0.5 into 10 to the power minus 6, divided by 1 का square. So K into 2.5 into 10 to the power minus 12. इसको F से divide कर दो, you get your answer. F की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है.
फोर्थ पार्ट में 16. हम्म 16. ओके। इन F/16 आ रहा है, मेरा तो F/16 आ रहा है। क्या आ रहा F by 16 only, sir. है? F/16। अब आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशंस व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन ABC? जरा देखो एक बार। मैथ हो गया, समझ में आ गया? अब Yes, sir. A B और C पे फाइनल चार्जेस बताओ कितना है। अब A पे कितना है, B पे कितना है, C पे कितना है? A पे कितना चार्ज है? 5 microcoulomb. 5 माइक्रो कूलम। B पे कितना आ गया है? 0.5. एंड C पे? 0.5. तो अब क्या हुआ, चार्ज कंजर्व हुआ है नहीं हुआ, जरा देखो जरा। इन द बिगनिंग सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था? ऑन द 6. सिस्टम व्हाट वाज द टोटल चार्ज? 6 microcoulomb. 6 6 माइक्रो। microcoulomb. अब कितना है? 6 microcoulomb. 6 माइक्रो। दैट मीन्स on an isolated system the total charge remains conserved। तो इससे हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी प्रूव कर दिया। सारा क्लियर हो गया? Next, 2 point charges are placed at some separation r, the force between them says 100 Newton। The two charges Q1 Q2 are separated by some distance r, the force between them is 100 Newton। When distance is halved, distance is now r by 2, and we have replaced the in the earlier part there was no medium between them, it was only air. There was air in between. Now we have placed some medium, placed inside a medium, and now force has become F dash with 25 Newton। डिस्टेंस r by 2 कर दिया, आधा कर दिया, और दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम भी रख दिया, और फोर्स की वैल्यू 25 न्यूटन हो गई। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r एंड एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम? उस पर्टिकुलर मीडियम का एप्सिलॉन r बताओ, और उस मीडियम का एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ। आंसर करो, टेक योर ओन टाइम। The beginning both the charges were at a separation r, force between them was 100 Newton, and they were placed in air। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, and the some dielectric medium between the two charges, we saw that the force has become 25 Newton। Question is fine. Epsilon r and epsilon.
So ER is 4. Epsilon r is 4. क्यों? So because FA by FM is equal to E by E naught. So बट 100 by 25. वो तब होता है जब डिस्टेंस सेम थी। यहाँ डिस्टेंस भी तो आधा कर दिया मैंने। Okay. जल्दबाजी कर रही हो तुम। इनिशियली फोर्स बिटवीन देम इज 100 न्यूटन, लेकिन ये 100 न्यूटन कब है? व्हेन यू हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। इक्वेशन नंबर 1। 70 में से 70 चाहिए मेरे को फिजिक्स में, इसलिए तो सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे तभी क्लियर होंगे जब व्हेन यू आंसर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, जिसमें कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब मीडियम तो है ही, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बिकॉज एप्सिलॉन आ जाएगा अब, नो डाउट अबाउट इट। और डिस्टेंस भी तो चेंज कर दिया हमने, ये हो गया R/2। और ये फोर्स कितना है अब? ये फोर्स हो गया 25। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2, देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या हुआ महक, थक गए तुम? So ER is 16, यार मत बोलो, नाराज हो जाएगा। एप्सिलॉन आर। epsilon R हाँ, कितना? is 16. ओके। और एप्सिलॉन? So 141.60 into 10 raised to the power minus 12. ओके, so 100/25, this is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये है 1/4 pi epsilon not epsilon R 4 Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 कट गया, R square कट जाएगा, 1/4 pi epsilon naught कट जाएगा। यार 100/25 is equal to epsilon R/4। लो कर लो बात। एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई 16। एप्सिलॉन R की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन R? It's unitless. Yes, it's unitless, dimensionless। अब next part of the question was कि what is the value of epsilon? Epsilon is epsilon not epsilon R। epsilon not कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12 इंटू 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 इंटू 8 देखो क्या वैल्यू आ रही है। कितना बताया तुमने मेरे को? So 141.60. ये इसकी वैल्यू है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो अभी तक जो किया वो सारा देखो एक बार, कहीं कुछ डाउट है? इसी तरह क्लियर हो गया? Yes, sir. What is the value of epsilon r for air? epsilon r for air कितना होगा? So 1. Yes। And what is epsilon r for all conductors of metals? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर सेम होता है। जो भी कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, उनका एप्सिलॉन आर कितना होता है? इट इज इंफिनिटी। लिख लेना। All metals or conductors, they have
epsilon r is equal to infinity. तो कोलम्बिक फोर्स समझ में आ गया ना बिल्कुल बढ़िया से. इसमें मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि there are two with balls like pendulums having charge and masses m and q. They're suspended by two strings from the same point and they are separated by distance r or x or 2x maybe. So find q on each ball in terms of other parameters. उसके बाद I'll be starting with electric field. So next class will be very very important. In fact, all the classes are important. But इस क्वेश्चन करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे. स्कूल में तो शुरू हो गया होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म भी हो गया होगा. तो चल रहा है अभी. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू फोर्स. फोर्स में से अगर हम एक चार्ज को हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. Or in case you have some question in your mind which you didn't ask your school or school teacher, you were scared or something like that, you had some doubt, कुछ assignment मिला है स्कूल से? तो अभी नहीं मिला. आई चलो थिंक एक आध हफ्ते में स्टार्ट होंगे सीरीज. ठीक है. तो इन अगर कुछ कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, वैसे पूछ भी सकते हो अलग से. ठीक है. ओके. यस. एंडिंग द क्लास नाउ.